Hi friends. So this video is brought to you for answering all your questions. Like recently बहुत सारे लोगों ने आप से मुझे पूछा था कि फोरम what is your favorite shopping place, what is your favorite like आप कहाँ से groceries buy करते हो, या फिर आपके हिसाब से कौन से प्रोविंस में घर खरीदना चाहिए, या आपके हिसाब से कौन से फील्ड में अच्छे जॉब्स है, या आपके हिसाब से कैसा फील हो रहा है एक साल के बाद बड़े सिटी से छोटे सिटी में आना, या फिर आपके हिसाब से कनाडा में 2024 में आना चाहिए या नहीं. सो ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है. मैं अगेन कहूँगी, I am not any agent, I am not any immigration consultant, and yes, this is only and only my personal perception and for people who really ask me answers to this. एंड तक अगर वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा. शायद ये इनमें से कोई भी एक पॉइंट किसी को भी आपके मतलब जानने वाले या फिर आपके फैमिली में से कोई है जो आने वाला है, या वो चाहते थे कि वो मुझसे बात करना चाहते हैं एंड मैं शायद अवेलेबल नहीं थी, तो ये वीडियो उनके लिए भी है. माई एक्सपीरियंसेस ऑन हाउ आई फेल्ट approaching for any health related facilities in Canada, or maybe if I was trying to understand that what are the monetary budgets which were my constraints. मेरे को जब फील हुआ कि मुझे ये चीज़ों को पहले से ध्यान में रखना चाहिए था, तो ये सारे मिस्टेक्स भी मैं इस वीडियो में शेयर करने की ट्राई करूँगी. ठीक है. और बिफोर वी बिगिन एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिए, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो मैं ये वीडियोस बना के किसी और जो जेन्युइनली चाहते हैं, जिनको जेन्युइनली हेल्प की ज़रूरत है, मैं उन तक ये वीडियोस को नहीं पहुंचा पाऊंगी. तो एक लाइक, एक शेयर और एक फॉलो बनता है. एंड इतना तो शायद सलमान खान ने भी रेडी में बोला था कि हम एक को हेल्प कर सकते हैं और दूसरा कोई एक को हेल्प कर सकता है, और दैट्स द ओनली गेम वी हैव टू डू. वीडियो शुरू करते हैं. कभी भी ग्रॉसरी करना पसंद करती हूँ तो मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ कॉस्को. क्यों? क्योंकि वहाँ पे मुझे ज़्यादातर क्वांटिटी चीज़ें मिल जाती है, तो मैं मॉल्स में जाके और शॉपिंग नहीं करती हूँ. एंड इट हेल्प्स मी टू मैनेज माई control my budget for the grocery. Second comes is my clothing. So in my clothing list, I personally do not keep shopping a lot. I make sure that I use my clothes which I brought back from my country. I also make sure that I'm investing in the right jackets so I don't have to re-buy them. And I make sure it is important for the reason I'm buying it. Always wait for all the offers going on in the market, so that way like I take chance of the Boxing Day or maybe Black Friday, and I really wait for any shops to come out with their like last sale category, so I can buy the least priced clothes. And yes, if I want to really buy something which is a branded thing, I really do not count and calculate if it is something what I wanted to buy. That way it helps me managing my extra spendings, and also it makes sure that I am not going beyond my budget. My purchases in terms of any electronics or any house appliances, again I go during sale times. I prioritize my list. I see what is really very important and I am not able to live without it. Buying something durable, it has to be stylish, so I'm motivated enough to keep this for a longer time. I'm a very big fan of decoration. I mean, I like decorating my house. I like decors. I like small cute things. I mean, it's just something which makes me happy. And I am a big believer of you should do things which makes you happy so you can make others happy. So yes, I make sure I invest enough in something which is
which is of my area of interest. And if I want to buy something like this, I make sure I'm going to dollar store or I'm going to a thrift store, so that way I also overcome all my needs and make myself less anxious to buy that things, but also make sure I'm in a budget and I'm also enjoying and exploring things which are available to me. I also make sure that I have a specific thing in my mind when it comes to vegetables. Although all the vegetables in Canada doesn't have tax implications, I'm not sure about the other part of the Canada, but I'm very sure in New Brunswick we don't pay tax for any of the vegetables. Buying the stuffs during the weekly offers, so that way I have major of the things, fruits and vegetables, what I want to stock for the week. Do your research. One more time, I am not an expert, I'm just sharing my experiences. Also sharing about the monthly budgets, because it plays a very important role. And I realized a mistake when I was a newcomer. I came in, I was hopping around everything what I liked, and that really gave me a big financial stress. And to be honest, it's very important to be very mindful when you're managing your money in abroad, and especially Canada being a booming topic in the news channels or anywhere in the world. Everybody is just focusing on that, how do we just arrange that money what is required for the immigration. But trust me, after coming here to Canada, I realized one thing, that it is not only about the immigration funds requirement. It is also about how you will actually develop a lifestyle in Canada and how will you overcome that situations. Now, it might be different for every human being. Everybody would go through different stages, and according to their lifestyles, they would develop a need or an expectation from one particular, I would say, maybe their life cycle or a phase, and the demands would always come based on the customer or maybe a consumer's sentiments. But once again, my personal opinion or my personal suggestion is, make sure you have a monthly budget. If you do not have a monthly budget, America, or I would say any other country other than your own home country, it's gonna be a big toss. It's gonna be a big culture shock, where you are gonna extra spend than what you were spending. So making a money management plan for yourself before coming or even after coming is a very important step at every part of the life. About talking about the health related concerns or health experiences, benefits are almost free. Other than you buying any over the counter medicines, most of the places you will get free health services. So that's not something which I would really have any concerns on, because that's something I find a plus point. Because back in my country, I was always paying for even a test, but when I came to Canada, everything was totally free. Depending, I have a health card, and I was good to stay or live in that province and have and avail all the health benefits. Now, when I talk about health benefits, I did realize one thing, that no matter you don't have family doctors, you still have a helpline which is 811, where you can just call, talk to the nurse, tell them your symptoms, and they will ensure that you are registered for that particular, referral or a doctor to consult. Now, I'm very sure there is a delay when it comes to appointments, but again, if there is an emergency, it's a bit difficult task to get through. But yeah, if it's not difficult, it's not something emergency for you, then it's pretty smooth. It does convey the expectations what you're looking for. There is a lack of communication sometimes, because you don't know whom you're coordinating with, because there's so many different doctors that gets assigned to you for one single thing, and you sometimes can lead to a mental health, like you might get affected mentally because of this, and it might sound a bit overwhelming. So for me, it is like, you're getting the benefits, but again,
there is a catch. In regards to mental health, I see maximum like number of people who are in Canada, especially in the colder regions, all go through some or the other mental health issues. For me, I feel it's a very important factor that a person should understand how important it is to take care of your mental health. I know it's not a common culture across the world. At times, people do not take it as a big real importance. There are so many helplines, there are so many therapists around that you can take the advantage of and you're not aware of. We always think that there is a charge involved and it's a very heavy charge, so we don't go it, or maybe we judge ourselves or we judge our families or loved ones if they are going for a therapy, or they are going for any specific treatments. अगर मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, आप खुश नहीं हो, आपसे कोई चीज़ें, आप किसी से, आपके सारे लव्ड वन से दूर हो, फ्रेंड्स नहीं हैं, तो मेरे हिसाब से आप कितने भी कंपटीशन में आगे बढ़ो या कितनी भी तरक्की कर लो ना, ये सारी चीज़ों के अलावा लाइफ में कुछ और है ही नहीं. एंड ये मैंने बहुत गहराई से ये फील किया. 1 साल के टाइम में मैंने ये सारी चीज़ें खुद रिलेट की और मैं उसी के बाद ये चीज़ को बहुत फोकस से मानना शुरू करने लगी कि येस, how much important it is to take care of your mental health. When it comes to career, again, it might sound very overwhelming for a lot of type of different immigration statuses. बहुत कुछ चल रहा है यार, 2024 में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतना न्यूज़ चल रहा है और इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं. I'm very sure it is a big task. It's a big challenge for people who are sitting back in India or maybe back in any country and waiting for their immigration status, and they are sure that they want to come here, but they don't know how to come here. They don't know anymore what I mean, how much things have shaken up, maybe you say mentally, physically, financially, and the most important thing is the internal shock of accepting that okay, fine, I will be able to adapt to this culture. So that is something I personally feel makes it a big task for a person to decide what is your future career. Yes, I understand, I accept all the YouTubers saying that you should have part-time, you should have full-time, you should have 3-4 jobs, but in 1 year's time, I understood one thing, that not necessarily for everybody it's gonna work like the same way how others are doing. मुझे नहीं लगता है कि वही एक solution है, right? I don't know, मतलब आपका क्या purpose है, आप क्यों आए हो, मुझे नहीं पता आपकी क्या मजबूरी है, बट जो भी मजबूरी है ना, मुझे बस एक ही चीज़ हमेशा से खटकती है कि हम कहीं पे भी जाए, इतना दूर जाए, तो हम मतलब क्यों जाएंगे अपनी फैमिली से. पैसे इतने तो इम्पोर्टेंट नहीं होते कि हम पहले तो, अगर हमें सिर्फ पैसे का कंसर्न है तो हम उतना पैसा खर्चा करके बाहर नहीं जाते, राइट. पर हम कुछ और चीज़ों के लिए बाहर आए हैं. जैसे कि मुझे लगता है मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था ये जानना कि मेरी लाइफ मतलब एक लाइफस्टाइल स्ट्रॉन्ग बने, मुझे वो लाइफ में रह के मुझे वो सेटिस्फैक्शन मिले जो मैं शायद नहीं ले पा रही थी अपनी लाइफ से. एंड मे बी मेरे पास वैसा कोई बैकग्राउंड नहीं था जहाँ से मुझे लगा कि उतना स्ट्रॉन्ग फैक्टर है कि मुझे आगे जाके काम नहीं भी कराना गाइस तो कोई दिक्कत नहीं है. तो आई वुड से प्लीज़ रिसर्च, प्लीज़ प्लान दिस थिंग्स. आई एम नॉट सेइंग दैट जस्ट बिकॉज मैंने कोई तीर मार लिया तो कोई और नहीं कर सकता. वही है, मुझे आगे तो नहीं पता है, पर 5 years गाइस, 5 years निकाले थे मैंने PR के चक्कर में. तो आप खुद ही समझ सकते हो कि मैंने भी बहुत सारे पापड़ बेले, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है. और मैं तो यही बिलीव करती हूँ कि हम जब तक एक गलती नहीं करते ना तब तक हमें समझ नहीं आता. एंड आई थिंक दूसरों की बातों पे आके कोई भी डिसीजन लेना ही नहीं चाहिए. That is the reason sometimes some of you have approached me to guide you about how to come to Canada, and I do not personally like that
question. The reason being, how come you can go just by somebody's thoughts that you want to go to Canada? No, I never did this. So I would not let somebody decide on the basis of what I am doing, right? My videos are very limited for a reason. मैं भी चाह के यार बहुत सारा कंटेंट बना सकती हूँ, मतलब क्या ही फ़र्क पड़ेगा. मुझे बोलना पसंद है, मैं बिंदास हूँ और मैं डरती तो नहीं हूँ कैमरास के सामने. बट वही है, मैं हिचकिचाती हूँ लोगों से कोई भी इंस्पिरेशन शेयर करने के पहले, क्योंकि मैं उसके बारे में 10 बार सोचती हूँ कि मैं उसके बारे में क्या फील करूँगी, मैं किस तरह से उसके बारे में रिएक्ट करूँगी. एंड फिर मैं अगर किसी को कुछ बताऊँ और नॉट एडवाइस, बट मैं अगर उनको इन्फ्लुएंस करूँ तो मैं प्रिपेयर्ड होनी चाहिए. You should be grateful about is every step what you go through your journey when you are an immigrant, or maybe when you are aspiring immigrant. So I would not say in 1 year or 2 year anybody in that matter should be able to judge anything. You never know guys. मैं आज ऐसे बोल रही हूँ, 5 years के बाद मेरी लाइफ अलग होगी. मैं शायद आई डोंट नो, मतलब मैं कहाँ होंगी, मैंने क्या सोचा होगा, मुझे नहीं पता है. और मैं ये वीडियोस उतने ही नेचुरल रखना पसंद करूँगी, बिकॉज दैट इज़ द मेन मोटो ऑफ मी एंड यू कनेक्टिंग, राइट? एंड that is the more important thing for me to make videos, because again my videos are mostly to follow my project, which is my passion project, not for any business. Not till now I haven't decided anything like that, but I love making videos, I love talking to people, and I believe कि आप लोगों से बात करके मुझे जो कॉन्फिडेंस आता है, मैं उसके लिए जितना अपने आप को चेस करती हूँ ना, दैट मीन्स अ लॉट टू मी, एंड रियली मीन्स अ लॉट टू मी. एंड जो भी लोग आप में से अभी भी मेरे बिना वीडियोस देखे भी मेरे साथ जब भी अपनी बातें शेयर करते हो कि आप मेरे वीडियोस देख के कितने इंस्पायर हुए थे, कितनी हेल्प हुई थी आपको, तो दिल से धन्यवाद. एंड आई रियली अप्रिशिएट ऑल योर काइंड appreciations and support which you guys try giving me, even being not that great in making my content, which I am honest about, and I want to learn, I want to improve on that, but again I want to be honest. मैं कोशिश की है मैं जो पॉइंट्स 1 साल की कंपैरिजन में आपसे शेयर कर सकूं, आपको बता सकूं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू. और लास्ट टॉपिक जो था, जो मैं ऐड करना भूल गई, 2024 में क्या कनाडा आना जेन्युइनली वर्थ है, तो मेरा आंसर अभी भी यही रहेगा कि भाई कोई भी चीज़ कर लो ना लाइफ में, आप अगर दिल से चाहते हो, आपको करना ही है, तो येस वो वर्थ है. अगर वैंकूवर महंगा है ना, तो भी वो वर्थ है. अगर टोरंटो महंगा है ना, मैंने अभी सीखा है टोरंटो को टोरंटो नहीं बोलते हैं, टोरंटो बोलते हैं, बिकॉज टी इज साइलेंट. सो मुझे बताना अगर फिर भी मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ, विच इज़ ओके, आई एम रेडी टू टेक द फीडबैक, बट आई एम लर्निंग, राइट? यही है कि अगर आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी भी नहीं है ना, फिर आप उसको इम्प्रूव करने के एफर्ट्स डालते हो, या फिर आप फ्रेंच सीखना चाहते हो एटलीस्ट, वो भी बहुत है. तो फॉर मी आई फील नोबडी इन दिस वर्ल्ड इज परफेक्ट. थिंग्स विच कैन ब्रिंग दैट चेंज, और मे बी आई वुड से यू कैन वर्क ऑन योर हैबिट्स. जैसे कि 1-2 बुक्स है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे कि वन ऑफ द बुक इज Atomic Habits. Do try if you get a chance to read Rich Dad Poor Dad. These are the books which will really develop you as a person. With you don't need to change, even with the change in the environment or maybe the country. आप कोई अच्छे प्रोविंस में रहना चाहते हो, खर्चा करना चाहते हो, प्लीज़ कीजिए. बट जो भी करो ना, पहले ना यहाँ और यहाँ एक बैलेंस बना के करो. किसी के बोलने पे, किसी और के करने पे या दिखाने पे मत करो. दैट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड दिस इज़ वॉट आई स्ट्रांगली फॉलो. एंड ना फिर वो सब ऊपर वाले पे छोड़ दो, दे विल हेल्प यू. जॉब की, करियर की, ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइज, मैं भी बहुत कंफ्यूज थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे कहाँ जाना है. बट आई लिटरली मेड अप माई माइंड, आई विल गो विद द फ्लो, एंड दैट्स द ओनली आंसर. और यहाँ तक पहुँचते वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है,
सो इसको मैं कट शॉर्ट करके यहाँ पे स्टॉप करूँगी। सारा बोल दिया है 2023 का, जो भी बाकी था, कुछ गलती हुई तो मुझे माफ़ कर देना, एंड साथ ही साथ ऐसे ही प्यार देना। और फिर से मिलती हूँ मैं 2024 में। इस बार ट्राई करूँगी, बकेट लिस्ट ब्रेक नहीं करूँगी, बट येस गाइस, अपना ध्यान रखिए। चलो बाय बाय।